Namaskar and a very good evening. Welcome to another episode of Currency Trading with Kotak Securities. और आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे. जनरली हम लोग इधर ऑप्शन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और जो आपका रूपी क्रॉसेस है उसके बारे में हम लोग बात किए. आज वी विल बी टॉकिंग अबाउट की टूल्स ऑफ एनालिसिस, कि कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हो इन करेंसी मार्केट, टेकिंग द एग्जांपल लार्जली ऑफ USDINR, और उसको यूज करते हुए हाउ यू कैन मेक ट्रेडिंग decisions and also manage your existing positions. So without any ado, let's start the presentation. Can we have the presentation, please? Techno-funda analysis. नाम काफी mouthful hai, because what is techno-funda? In fact, it is a bit clear from the term. Basically, it's a combination of technical analysis and fundamental analysis. So technical analysis का भी दो अंग है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और फंडामेंटल एनालिसिस करेंसी में जनरली इज मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. बट जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का बात करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग कि हम लोग को इकोनॉमिस्ट बन रहा है. नो, वो एकेडमिक अप्रोच है. यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये जो डेटा रिलीज होता है, इकोनॉमिक डेटा रिलीज, GDP, FPI फ्लोज एक्सेट्रा, इसको कैसे हम लोग एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में डाल के एनालिसिस करें. सो एज आई सेड, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस, और उसको ब्लेंड करते हुए विल बी एबल टू मेक डिसीजंस ऑफ ट्रेडिंग. टेक्निकल एनालिसिस है, इंटर मार्केट एनालिसिस है. ये इंटर मार्केट एनालिसिस क्या है, विल बी कवरिंग इन द सेक्शन. तो ये 3 अंग है. सो टेक्निकल एनालिसिस, इंटर मार्केट एनालिसिस और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. एक्चुअली इंटर मार्केट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन किया जाता है, एंड इट इज बेसिकली प्रेजेंटेड एज अ कंबाइंड टेक्निकल एनालिसिस. बट ठीक है, इस प्रेजेंटेशन के लिए वी हैव केप्ट इट सेपरेट फॉर अ रीजन. यू विल अंडरस्टैंड व्हाई. पहले वी विल कवर टेक्निकल एनालिसिस. और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा. मेनी ऑफ यू, आई प्रिज्यूम, विल बी ऑलरेडी यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस. सो टेक्निकल एनालिसिस का 4 स्तंभ है. फर्स्ट, ट्रेंड एनालिसिस, मतलब मार्केट में ट्रेंड है या नहीं. दूसरा, अगर ट्रेंड नहीं है तो इज इट अ रेंज बाउंड मार्केट, क्योंकि मार्केट कभी कभार कैन बी सिंपली चॉपी, गोइंग अप एंड डाउन विदाउट एनी ट्रेंड. बट एक रेंज भी हम लोग, मतलब एक प्रॉपर बाइंग एंड सेलिंग लेवल उसमें आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी है या नहीं, दैट विल डिटरमाइन कि उसमें रेंज है या नहीं. सो ट्रेंड है कि नहीं, रेंज है कि नहीं, और थर्ड, मोमेंटम है कि नहीं, और फाइनली उसमें कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि नहीं. सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इज बेसिकली कि जो मार्केट है उसमें क्या अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड मूवमेंट है. तो हम लोग अपवर्ड मूवमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली इट इज अ हायर हाई, मतलब ये जो है हायर प्राइस, एंड जो नेक्स्ट इसका रिएक्शनरी लो है, that is higher than the previous low. So higher high, higher low makes an uptrend. Lower high and lower low makes a downtrend. तो इसको डिफाइन करने के लिए, इसको प्रॉपर्ली डिमार्केट करने के लिए, ऑन द चार्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑन द प्राइस चार्ट, हम लोग ट्रेंड लाइन का सहारे लेते हैं. सो ट्रेंड लाइन क्या करता है, इज बेसिकली इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, और वही ट्रेंड लाइन मार्केट में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बन जाता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग दैट ट्रेंड लाइन. बट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना चाहिए. दो दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट अ डीप डाइव इनटू टेक्निकल एनालिसिस, बट ये कुछ एस्पेक्ट्स है जिसके बारे में मैं टच अपॉन करूंगा, बिकॉज इफ योर बेसिक्स आर राइट, you can build the entire structure on that strong foundation. इसलिए बेसिक्स राइट होना बहुत जरूरी है. 2 पॉइंट मिल गया, मैं ट्रेंड लाइन उसमें डाल दिया, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. सो ट्रेंड लाइन बेसिकली इज कि मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए. और आप जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो,
तो उसमें जो स्पेसिंग है, ये देखिए, जो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, इसमें जो स्पेसेस है वो उसमें एक प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक 10 दिन का है गैप और दूसरा इज 1 महीना। एक प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि तब ट्रेंड लाइन एक जायज ट्रेंड लाइन होता है, और देन इट बेसिकली कैप्चर्स कि मार्केट का उस टाइम फ्रेम में व्हाट इज द अंडरलाइंग ट्रेंड। क्योंकि एक मार्केट में देर आर मल्टीपल ट्रेंड्स विच आर एट प्ले एट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, राइट। हम लोग एक पर्टिकुलर वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ दैट ट्रेंड लाइन, और एल्स हम लोग ऐसे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे विच विल बी कंसिडरिंग 3 or 4 ट्रेंड्स इन इट। तो इसके लिए दिस aspect has to be clear, minimum 2 points, the more the better, and at the same time जो spacing है between the reactionary lows, that should be proportional, consistent एक वहाँ होना चाहिए, तो ही it makes a sensible trend line. Again it's same thing applies for a down trend line. उसमें भी जो reactionary highs है उसमें भी एक proportional distance होना चाहिए, then it's one single trend line, or else those are basically 2 or 3 trends which I am misrepresenting through one trend line. क्योंकि जब ट्रेंड लाइन प्रॉपर होगा तो वो ट्रेंड लाइन का यूज इन जनरेटिंग अ ट्रेडिंग सिग्नल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, so that I can know where to buy, where to have my stop loss. क्योंकि ट्रेंड लाइन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है जहां पे अराउंड द ट्रेंड लाइन, क्लोज टू द ट्रेंड लाइन, जहां पे लोग फ्रेश ट्रेड और फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, और उसके कुछ पॉइंट नीचे वो स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं। देन दैट एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस हैज सम लॉजिकल सेंटिटी। इसके लिए ट्रेंड लाइन इज इंपॉर्टेंट, एंगल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब अगर बहुत स्टीप है, अगर ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, लाइक 75 डिग्री ऐसा है, देन दैट ट्रेंड लाइन है इज जस्ट अरिथमेटिक लाइन, इट हैज नो मीनिंग, बिकॉज इसका मतलब क्यों कि कोई भी ट्रेंड अगर वर्टिकली ऊपर गया है या वर्टिकली इट हैज कम डाउन, फॉर इट टू सस्टेन इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो एक पैनिक रिएक्शन है, और जैसे ही वो पैनिक खत्म होगा ऑफ द बायर्स और द सेलर्स, तो ऑटोमेटिकली सम काइंड ऑफ ऑपोजिट मूव कैन हैपन, राइट। सो इसके लिए उस टाइम वो ट्रेंड लाइन को उतना सैंटिटी है नहीं, बट एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन अगर है, मतलब लेट्स से एनीवेयर बिटवीन 30 to 60 degree angle, so the idea is it should be a healthy trend, so then it makes sense to focus on that trend line as a entry point or as even as a risk management, क्योंकि risk management के लिए बहुत important है कहाँ पे मैं stop loss रखूं. So this is called trend analysis. अभी trend analysis है तो trend line का reversal भी है, excuse me, trend line का reversal भी है, which means when a trend line breaks, then we call it as a reversal. मतलब वही मैं बताया कि ट्रेंड लाइन कैन बी यूज फॉर एंट्री एंड ऑल्सो फॉर एग्जिट, मतलब रिस्क मैनेजमेंट, एंड ऑल्सो टू डू एन ऑपोजिट ट्रेड। मतलब इफ आई वांट टू गो शॉर्ट इन द मार्केट, अब ट्रेंड था, मार्केट जाके ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया एंड देयर इज अ फॉलो थ्रू सेलिंग, आई कैन इवन गो शॉर्ट इन द मार्केट। सो ट्रेंड लाइन इसके लिए ड्रॉ करना बहुत, मैंने प्रॉपरली ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और देन इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल टूल। मतलब आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को ही यूज करके बहुत सारे ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रॉपरली विदाउट ट्राइंग टू पुट टू मेनी इंडिकेटर्स ऑन द चार्ट। सो द ट्रेंड लाइन का यही जो है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यू कैन बाय अबव सपोर्ट क्योंकि एंट्री पॉइंट है, सेल बिलो सपोर्ट, राइट, तो विच मीन्स अ रिवर्सल है वो, और रेजिस्टेंस है सेम थिंग, यू कैन बाय अबव द रेजिस्टेंस विच मीन्स अ रिवर्सल ऑफ डाउन ट्रेंड, and sell below resistance is basically an entry point in the existing trend. Trend line के साथ दूसरा tool which I would suggest, see there are n number of tools but I'm just picking two very simple and powerful tools. एक है trend line और दूसरा है it's a moving average. What is a moving average? Basically average क्या है
कि कुछ दिन का, लेट्स से 10 डे एवरेज, 10 डे एवरेज मींस जो लास्ट 10 ट्रेडिंग डेज का प्राइसेस है, इफ आई एम टेकिंग डेली क्लोजिंग प्राइसेस, तो जो प्राइसेस है उसका एवरेज प्राइस और मीन प्राइस, मतलब वी एड अप द प्राइस एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम पीरियड, इन दिस केस 10, तो वो होता है एवरेज। तो फिर मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज मींस एवरी न्यू डे, मतलब आज तो मैं लास्ट 10 दिन का कैलकुलेट कर लिया, आफ्टर टुमारो तो एक फ्रेश एक दिन ऐड हुआ, तो बट आई वांट ओनली 10 डेज, तो वो क्या करेगा, वो जो फर्स्ट डे था उसको ड्रॉप कर देगा और जो नया दिन है उसको ऐड कर लेगा। सो इट विल ऑलवेज बी अ फिक्स टाइम पीरियड बट मूविंग, राइट? तो इसके लिए बहुत है मूविंग एवरेज। सो मूविंग एवरेज क्या दर्शाता है? मूविंग एवरेज बेसिकली कैन बी यूज टू वेज। एक है कि इट कैन बिकम अ प्रॉक्सी ऑफ द प्राइस, मतलब प्राइस तो काफी वॉलेटाइल होता है क्योंकि इट्स वेरी नॉइजी, अप डाउन मूवमेंट्स होते हैं। इफ आई वांट टू क्रिएट अ स्मूथनिंग, मतलब एक प्रॉक्सी अगर मैं बनाना चाहता हूँ प्राइस का, तो मैं एक टाइम पीरियड का जो छोटा टाइम पीरियड है उसका एक मूविंग एवरेज अगर मैं प्लॉट करूं, तो इट बिकम्स अ प्रॉक्सी ऑफ द प्राइस। और वो प्राइस का जो आ, जो प्रॉक्सी बन रहा है वो मुझे बता सकता है कि अब व्हाट इज द ट्रेंड इन द मार्केट, क्योंकि उसका जो स्लोप है, मतलब इज इट स्लोपिंग डाउन और इज इट स्लोपिंग अप। जैसे ये जो मूविंग एवरेज है, मैंने 63 डे इसलिए लिया कि इट इज बेसिकली which counts as the last 3 months, 3 trading months, क्योंकि 21 trading days in a month into 363 day, तो मतलब जो टाइम पीरियड है मूविंग एवरेज का, उसका एक लॉजिकल बेसिस होना चाहिए। इट्स नॉट 200 डे काम करता है कि नहीं, 100 डे काम करता है नहीं। द बेस्ट वे टू फाइंड आउट आर टू, एक यू टेस्ट, यू बैक टेस्ट द मूविंग एवरेज इधर मैनुअली or through computers and see which one has worked, and at the same time it should have some logical basis. If you cannot backtest, then have a logical basis कि अगर मैं एक महीने का एवरेज देखना चाहता हूँ या एक साल का एवरेज देखना चाहता हूँ, एक क्वार्टर का एवरेज उसमें देखना चाहता हूँ, then that is fine. 200 day in itself it doesn't make sense. एक तो we have seen it through backtest, the 200 day fails uh, for most currency markets, for even for other markets too it doesn't work, because 200 day जिस टाइम पीरियड में ये पॉपुलर हुआ था उस टाइम में there used to be roughly 200 trading days in a year in US। इसके लिए अभी it is basically you have around 255 या 256 trading days in a year, so it should have some logical basis, or you do a back test and see which one has worked. So either a logical basis or a back test or both. So yeah, यहाँ पे I've just used a logical basis that I want to see a quarterly average 63 days, 63 trading days. So यहाँ पे slope is important और price in relation to the moving average, मतलब price के average के ऊपर trade कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी जो price action है that is bullish, because जो average prices है they have been lower than the current price, but at the same time अगर moving average भी sloping upward when the prices, जैसे यहाँ पे देखिए आप around the September November lows, जब GBP USD started to go above from below after staying below this average for a long period of time, जब ये ऊपर गया तो उसके बाद first prices went up, then the slope of the moving average was also upward. So it was clearly saying that अभी price action तो bullish है ही, at the same time जो trend है that has also turned higher, and moving average can at times act as support and resistance. Again मैं इसमें ज़्यादा emphasize इसलिए नहीं करूँगा because it is not a great support and resistance indicator. It is basically a good indicator for understanding the trend, but not really a good place for identifying as a support. अगर कुछ time it might work, but sometimes it simply may not work because it is supposed to be an average. अभी एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है, इसमें बोला जाता है क्रॉसओवर ऑफ टू मूविंग एवरेजेस। इसमें क्या होता है, वी टेक टू एवरेजेस, एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज।
what is the logic behind it? The logic is simple. जो सबसे short term moving average है, जहाँ जैसे इसमें we have taken the 9-day moving average, that basically is a proxy for the price. वो प्राइस का प्रॉक्सी है, क्योंकि प्राइस इज वेरी वॉलेटाइल. आई वांट अ प्रॉक्सी, सो इट इज अ प्रॉक्सी फॉर द प्राइस. और आई वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड. जैसे प्रीवियस चार्ट में था, तो थोड़ा सा मैं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम इसमें ले रहा हूँ. सो इट इज 63-day मूविंग एवरेज. आई कैन टेक इवन सम अदर टाइम पीरियड, बट उसमें कुछ एक लॉजिकल बेसिस होना चाहिए. सो यू कैन आस्क मी व्हाई 9 days and why not 10? Because we have seen that through vectors that 9 days have tend to work better, but 10 is also fine. There is not much of a difference between 10 and 9. So 10 is equally fine, and 10 basically represents the 2 weekly or a bi-weekly price, because bi-weekly average price is basically represented by the 10-day or the 9-day average. So that is a proxy for the price. So I want to see the trend, the slope of the trend, right? Is the slope of the average, and at the same time prices, how are they behaving compared to the averages, above it or below it. और यहाँ पे एक additional condition भी आ सकता है कि how is the short term average behaving compared to the longer time frame average. So job the short term average is above the longer time frame average and prices are above it, we call it a strong upward market. And when it is below it, we call it a strong downward market. So again, these are trend indicators. So now from trend we come to range. रेंज ट्रेडिंग क्या है कि वेल डिफाइंड एक प्राइस ऑसिलेशन है. मतलब लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज ऑपरेटिंग बिटवीन 500 और 550. सो इट इज क्रिएटिंग वेल मार्क्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल. मतलब जहां से इसमें बाइंग आ रहा है कंटिन्यूअसली अराउंड लेट्स से 500, सो 500 अराउंड दैट प्लेस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. और 550 के आसपास it is getting sold. वहां पे supplies are coming. Now who is supplying यहाँ पे is not important, because it can be anybody. So for example, अगर हम लोग USDINR का बात करें, तो हो ही सकता है कि RBI could be selling at a higher level, and at this same time speculators could be buying at a lower level. So the range has formed. तो range का advantage क्या है कि it can give you lot of entry exits, क्योंकि you can buy near support and stop loss is small below support. You can sell, you can exit and sell near resistance. Your stop loss will be above the range high. जैसे अभी अगर हम लोग बात करें in USD, and it is well documented that 8330 के आसपास आते ही शायद RBI is selling aggressively for the past 2.5 to 3 months. So 83, anytime it gets close to 83, somebody is selling. So the stop loss will be around, let's say 83, 33, 34 or 35. एकदम well defined small stop. Same time 83 के आसपास it is getting bought. So you buy it closer to 83. Stop loss, let's say 82.95. So it gives you a lot of entry exits in the market. You can go in and out. At the same time, अगर जब ये range break होगा, you have a well defined level. So that is the thing. But the risk is, अगर यही range can give you a false breakdown. That's one. Because हो ही सकता है कि 83 को एक बार falsely ये breach करे and it just goes back up. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि there is no follow through. मतलब let's say it breaks 83. I'm talking about USDINR. 83 or 83.30 is the range. So 83 को break किया, stop losses are hit of the buyers. उसके बाद we don't see, once those stop losses are filled, उसके बाद हम लोग fresh selling market में नहीं आता. So then what happens? The prices begin to retrace and go inside the range. So that is quite common with ranges. And second thing, it happens that range break होने के बाद the move is so violent that it doesn't trigger your stops. The price jumps. This possibility is there. अगर ये 83, 30, 32 का level को breach करता on the spot,
the risk is that the next move could be very violent because everybody will jump into the market to buy. और वो situation में your agar if you're short, your stop may not get filled first. Second, if you want to become long, if you place a limit order, usme execute now, because that's also a thing. And the other issue is that uh, what if it breaks on a gap at the open, मतलब gap up या gap down में ये break हो जाए, then you have to exit at the market price if you have ulta position, right? So that these are the risk of range trading. But जो day traders है उनके लिए this ranges, so it's not necessary it has to be on the daily. अब intraday में 30 मिनट का चार्ट हो, 15 मिनट का चार्ट हो या 5 मिनट का चार्ट भी हो, उसमें आपको एक वेल डिफाइंड अगर रेंज एक मिल जाए तो उसी में ही आप इन आउट ट्रेडिंग कर सकते हो. ये काफी एडवांटेजेस है फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स एज वेल. अभी एक चीज ये आता है कि हाउ यू कैन यूज एन ऑसिलेटर. मतलब ये ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर बेसिकली एक एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से, आई एम नॉट गॉन इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आरएसआई व्हिच यू विल गेट ऑनलाइन इजीली इफ यू टाइप द फॉर्मूला फॉर आरएसआई, you will get it. But basically RSI कैप्चर क्या करता है? RSI ये कैप्चर करता है कि मार्केट में कितना टेंडेंसी है टू कंसेक्यूटिवली मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर अप ट्रेंड है तो कितना वो टेंडेंसी है, कितना इंटेंसिटी है ऑफ दैट अप मूव और कितना इंटेंसिटी ऑफ द डाउन मूव. और बिकॉज इट्स अ बाउंडेड ऑसिलेटर, तो होता क्या है कि इफ द मार्केट इज इन अ रेंज, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. डोंट ट्राई टू यूज द आरएसआई और एनी ऑसिलेटर ऑन अ ट्रेंडिंग मार्केट, because a trending market is supposed to trend and RSI is trying to capture एक ट्रेंडिंग मार्केट में एक ऑसिलेटर, एक RSI एक एग्जांपल है, उसका काम है टू कैप्चर द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेंड. और ट्रेंडिंग मार्केट में तो इंटेंसिटी होना चाहिए, तो उसका एप्लीकेशन अलग तरीके से होता है. बट दैट्स नॉट व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर. वी आर डिस्कसिंग कि RSI को आपको कहां पे बता पाए कि द इंटेंसिटी हैज बिकम टू मच. ट्रेंडिंग में आप या डाउन हो, टू मच इज वेरी हार्ड टू से, बिकॉज स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब एमर्ज होता है इट कैन कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? सो उसमें टू मच कैन बी वेरी very dangerous. So there you go against the market and you can lose a uh, lot of money and also miss the entire trend. तो इसके लिए RSI may not be a great tool in a very strong trending market, but RSI is a fantastic tool in a range bound market जैसे USDINR है. तो उसमें क्या है कि वहां पे जो हम लोग बोलते हैं कि इन हाई एकदम when it has reached the peak and the bottom of its intensity, उसको हम लोग बोलते हैं overbought and oversold. तो then and if the prices are also close to the range high जब ये overbought हो रहा है and range low जब ये oversold हो रहा है, then you have a double confirmation of a trade. Then you can go long near support and sell near the resistance, and especially if you're holding a position, that's the time to exit. So RSI, again, I am repeating, is a fantastic tool in a range bound market. RSI ka use in a trending market has to be done in a very different way. But in a range bound market, overbought and oversold levels can be quite powerful with the price. So we have talked about abhi tak trend, how to identify the trend through trend lines, moving averages, और उसके बाद अगर ट्रेंड नहीं है, अगर रेंज है, तो कैसे हम लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गोइंग इन एंड आउट ऑफ द मार्केट. अब ये आता है मोमेंटम. मोमेंटम और स्पीड ऑफ द मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन अ ट्रेंड एमर्जेस, देखिए मोमेंटम कब इंपॉर्टेंट है? जब ट्रेंड है मार्केट में. रेंज बाउंड है तो मोमेंटम तो है ही नहीं. जैसे यूएसडीआईएनआर में 83 और 8330 का है, बट जिस दिन ये रेंज ब्रेक होगा उस दिन आपको मिलेगा मोमेंटम. देन मोमेंटम ट्रेडिंग विल बिकम वेरी रेलेवेंट. अब यही ट्रेडिंग अगर आप यूरो आईएनआर का करते हो, जीपीआईएनआर का आप करते हो या जेपीआईएनआर का, उसमें हाई मोमेंटम है क्योंकि उसमें ट्रेंड है. तो मोमेंटम इज द स्पीड ऑफ द ट्रेंड. ठीक है, तो जितना फास्ट है उतना ही हाई मोमेंटम है.
द होल आइडिया ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग इज व्हाट, कि मुझे जो जो ऊपर जा रहा है, जो अप ट्रेंड में है, आई हैव टू बाय दैट. सो आई बाय हाई एंड सेल हायर. दैट्स द होल गेम. आई बाय हाई एंड सेल हायर. डाउन ट्रेंड में विथ हाई मोमेंटम आई सेल लो एंड आई वांट टू buy back lower. So sell low and square up lower. High momentum uptrend में buy high and sell higher. So you are squaring up your trade higher. So that's the objective of a momentum trade. That you आप चलती गाड़ी में चल रहे हो, क्योंकि आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि ये गाड़ी चलता रहेगा, बस आपको बीच का मलाई खाना है. सो दैट इज अ हाई मोमेंटम ट्रेडिंग. एडवांटेज क्या है कि आपको, अगर आपका अंदाजा सही है तो आपको बहुत क्विक रिजल्ट्स आपको इसमें मिलेगा. सो यू डोंट हैव टू वेट. अगर आपने ठीक पकड़ा, लेट्स से ये 8330 और 83 का जो रेंज है यूएसडीआईएनआर में, आने वाले दिनों में ये ब्रीच होता है and you see a big move cut 8335. I'm just creating a hypothesis. This is not what is the analysis. It's a hypothesis. ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है. दिस इज नॉट फोरकास्ट ऑफ द प्राइसेस. आई एम सेइंग लेट्स से ऐसे होता है कि 8330 एक दिन ब्रेक किया और फिर सीधा 8335 40 45, तो हाई मोमेंटम है, उसमें आप चढ़ गए विथ लॉन्ग्स विथ अ प्रॉपर स्टॉप, और सीधा वो आप देखें कि जाके 8385, you just made 40 paisa, you exited. So this is the advantage of a high momentum. But high momentum is not always there in all markets. So you have to identify कि high momentum मतलब breakout कब आ रहा है, और breakout के बाद ऐसा नहीं कि हर वक्त high momentum trades breakout से भी मिलता है. High momentum trades existing strong trend में भी आपको मिल सकता है. मतलब if I go back in this trend में, तो ये जो है अप ट्रेंड है, इसमें जो ये पुल बैक्स आ रहे हैं टुवर्ड्स द ट्रेंड लाइन सपोर्ट, दीज आर अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन अ हाई मोमेंटम ट्रेड, अपवर्ड ट्रेंड. सो दैट इज द थिंग. इसमें रिस्क क्या है? द रिस्क इज दैट यू माइट एंड अप बाइंग टू हाई एंड और यू माइट एंड अप सेलिंग टू लो, बिकॉज इन अ पैनिक मार्केट जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आर पैनिकिंग, वहां पे नेचुरली द मोमेंटम इज हाईएस्ट बट इट डजंट सस्टेन. जैसे मैंने बोला कि ट्रेंड भी, अगर जब मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि द एंगल ऑफ द ट्रेंड 90 डिग्री है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, मतलब वर्टिकल अप मूव है या वर्टिकल डाउन मूव है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट टू सस्टेन इज लो, क्योंकि कोई भी पैनिक सिचुएशन जो इमोशनली चार्ज्ड अप एक मार्केट है, वो सस्टेन होना डिफिकल्ट है जब वो फैक्टर मार्केट से निकल जाएगा. सो उस इसके लिए सेम थिंग विद मोमेंटम. वो हाई मोमेंटम है और बहुत ज्यादा हाई मोमेंटम है, यू माइट एंड अप बाइंग समथिंग क्लोज टू द एक्सट्रीम हाइज एंड यू माइट एंड अप सेलिंग समथिंग क्लोज टू द एक्सट्रीम लोज. इसके लिए स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट. एंड ये एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि आप, ऐसा नहीं है कि एक मोमेंटम कंटिन्यू है तो इट विल कंटिन्यू. So you have bought something thinking it will continue. It may not continue. So these are very important things. Ki it is very important इसके लिए to have the stop losses when you are doing momentum trading. In fact, any kind of trading, specifically for momentum trading, क्योंकि you are buying something जो एक strong trend में है, तो वहां से अगर रिवर्सल होगा तो वो उतना ही वायलेंट हो सकता है. इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्टॉप लॉसेस व्हेन यू आर डूइंग मोमेंटम ट्रेडिंग. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ डाउनवर्ड मोमेंटम जहां पे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर था प्राइस, उसको ब्रेक किया. नेचुरली दैट प्राइस जो सपोर्ट था, इट विल नाउ बिकम अ रेजिस्टेंस. क्यों? वेरी सिंपल. व्हेन इट वाज इन अ रेंज, people were, the traders were buying near support and selling near resistance. तो naturally जब ये एक बार support को तोड़ा और the range became a trend, a down trend, तो naturally जब एक reaction आएगा ऊपर के तरफ, people who would have lost money by going long there, now they will try to sell because it's a human psychology कि उस टाइम तो मेरा मिस हो गया था,
अभी जाके उसमें मैं बेचता हूँ, और somebody who is still holding longs and paying mark to market will try to exit. So इसके लिए वो जो support था, it starts to become a resistance because जो demand zone था वो supply zone बन जाता है. इसको बोला जाता है change of polarity, and it can be fantastic trades which it can give you. मतलब एक proper entry with proper stop loss. So again ये USDINR का है, क्योंकि USDINR में we tend to see a lot of this kind of a pattern. एक congestion और then sudden momentum. एकदम perfect currency है to do range trading और फिर एक momentum trading. But momentum trading doesn't sustain for long. So आपको बहुत ही बीच में quick entry exit करके निकलना पड़ेगा. Why? Because RBI is a major player. So RBI को momentum पसंद नहीं है, because momentum मतलब volatility, high volatility, and RBI doesn't like high volatility. वहां पे आके वो intervene करता है, but वो कुछ क्षण के लिए वो momentum sustain होता है, and that's your opportunity to capture. So and USDINR is a perfect currency. It can just be range for months and then suddenly it will move. So यहाँ पे ये जैसे था, ये कंजेशन था, उसके ऊपर ये ब्रेकआउट दिया in September, and see the move. This was another example of a pause and downward momentum. ये था 2017 में, again a congestion for over a year, then a breakdown. अभी अगर एग्जिस्टिंग हाई मोमेंट, एक तो है कि कंजेशन में था, उसके बाद जैसे यहाँ पे तो उसके बाद ये ओपन किया विद अ गैप अप व्हिच इज अबव द कंजेशन जोन, you go long. Stop loss will be here below the trend line, right? You have a well defined entry and exit. यहाँ पे उल्टा, you go short, you have a well defined entry and exit. बट अगर एग्जिस्टिंग मोमेंटम है, जैसे ये ब्रेकआउट तो दिया, उसके बाद अगर अभी क्या, तो देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द ट्रेंड प्रिंसिपल. मतलब यू कैन यूज ट्रेंड लाइंस एंड मूविंग एवरेजेस टू गेज कि कहाँ पे फ्रेश एंट्री करना चाहिए. बट रिमेंबर वन थिंग अगेन इन यूएसडीआईएनआर, इट कैन बी इन अ रेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो मोमेंटम आता है इट डजंट सस्टेन फॉर लॉन्ग, तो वो आपको बहुत ही क्विकली उसका बेनिफिट लेना है बिकॉज ऑफ द आरबीआई's intervention, right? And unless the global situation is so dire that वो sustain ही रहे, जैसे आपका लास्ट ईयर था बिटवीन फेब्रुवरी एंड जब ये ब्रेकआउट्स आने स्टार्ट हुए, से लेकर ऑलमोस्ट लाइक मई जून तक it had sustained a strong uptrend, जो यहाँ पे एविडेंट है, आप अगर इसमें देखोगे. So this is evidence. So it continued. Then again, the next momentum came around September. Otherwise, यहाँ पे it sustains for a few days, एक high momentum zone, and then again it goes into a range because of the RBI intervention. So you have to be quick to capitalize in USDINR. Other currencies may the momentum can sustain for a long period of time, for several weeks or months. So again, this आपको existing momentum को trade करना है, तो this can be a tool, the trend tools. Or finally comes price patterns. Price pattern is what? एक geometric एक representation है of what? Equilibrium between a buyer and a seller. मतलब जो buying and selling है वो एक price range के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है, जिसके कारण price is going up and down और oscillating एक रेंज के अंदर, जो हम लोग इतने टाइम तक रेंज के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी को हम लोग पैटर्न में उसको डिनोट कर सकते हैं, वेरियस ज्योमेट्रिक शेप्स. और वो जो कंजेशन होता है, वहां से एक तो आपको कंजेशन में ट्रेडिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है फॉर रेंज ट्रेडिंग. दूसरा, जब वो कंजेशन ब्रेकआउट होता है तो आपको एक हाई मोमेंटम ट्रेड मिलता है. सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी विद प्राइस पैटर्न्स. और देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स, और उसको सर्टेन कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया गया है. So we have identified some very popular categories, and they can be used to even have some probable price targets जब ये breakout या breakdown होता है.
And of course the risk is, we all know, it can be also false as well. मतलब एक false breakdown और breakout भी हो सकता है. एक है आपका चैनल, अपवर्ड चैनल, साइडवेज चैनल, या आपका ये डाउनवर्ड प्राइस चैनल. सो एक प्राइस चैनल है, उसमें प्राइसेस आर ऑसिलेटिंग, राइट. सो यू हैव अ पैटर्न, जब वो चैनल का रेंज टूटता है तो इट कैन मूव, इट इज एक्सपेक्टेड टू मूव फास्ट. और वो जो चैनल का विथ है, दैट बिकम्स अ प्रोबेबल टारगेट फ्रॉम द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जोन. दूसरा है ट्रायंगल्स, एंड वी हैव सीन वन लाइव एग्जांपल ऑफ अ ट्रायंगल. ये ट्रायंगल है, जैसे ये स्पेसिफिकली, दिस इज अ नाइस triangle. So triangles can be very powerful price patterns. So triangles can be ascending, descending, and of course symmetrical. उसमें you can even have price targets. मतलब जो ट्रायंगल का रेंज है, उसको आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉइंट से प्रोजेक्ट करके प्राइस टारगेट में भी अराइव कर सकते हो. Wedges are sort of like triangles, but they have a slope, either upward sloping or downward sloping. जब वो range break होता है, they are supposed to do a fast move. So this is the advantage of a wedge. Flags है, these are all short term patterns. These are all short term patterns. लॉन्ग टर्म चार्ट में भी आपको ट्राइंगल्स या चैनल्स ये काफी आपको देखने को मिलेगा, एंड दे आर वैलिड पैटर्न्स. लेट्स से चैनल इज फॉर्मिंग फॉर, लाइक यहाँ पे this channel in 2017 was formed over almost 1.5 years or more. So channels can be fantastic patterns even on a longer time frame. But ये जो triangles भी हैं can also be on a longer time frame, but they become very powerful when it is a short to medium time frame. मतलब intraday से लेकर कुछ दिन, कुछ हफ्ते, a couple of months, like that. Because you are looking for short term trading opportunities here. इसके लिए अगर बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम से वो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, it may not be relevant for you as a short term trader. The shorter time frame में it becomes very important. डबल टॉप्स एंड डबल बॉटम्स, मतलब प्राइस एक रेंज में था, एक ही जगह पे जाके दो बार ये टॉप किया या बॉटम किया, एंड देन इट ब्रेक्स द अदर स्विंग हाई और लो. So that also offers you. So the advantage of chart patterns is that it gives you clearly marked support and resistance and break points, and the stop loss and the probable targets. That's the advantage. Head and shoulders I have kept, but I would suggest this is one pattern which is heavily misused, and a lot of the times it fails. So be careful trading a head and shoulder. But other patterns, जैसे channel, triangles, flags, pennants, then double tops, triple bottoms, these are fantastic patterns. Head and shoulders or inverse head and shoulders, be a little careful in trading them. So ये था टेक्निकल एनालिसिस. अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट इंटरमार्केट एनालिसिस. इंटरमार्केट एनालिसिस मतलब है कि बाकी जो मार्केट्स है वो कैसे इस पर्टिकुलर मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहा है. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट करेंसी मार्केट्स एंड स्पेसिफिकली USDINR. सो वी वांट टू नो कैसे इक्विटी मार्केट, अदर करेंसीज, बॉन्ड मार्केट, द कमोडिटी मार्केट इम्पैक्ट द करेंसी मार्केट. In this specific case USDINR. तो USDINR का जैसे एक पॉजिटिव कोरिलेशन है विद ऑयल प्राइसेस, बट नॉट ऑलवेज. मतलब अगर ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर जाते हैं तो इट कैन हैव
an upward push on the USD. जैसे अभी with oil around 92, if oil continues to move higher towards 9500, because जो जो मिडल ईस्ट में जो इशू चल रहा है उसके कारण, then USDINR can get badly impacted. मतलब इट कैन स्टार्ट मूविंग हायर, और जो रेंज में वो है 83 और 8330 के बीच, दैट कैन ब्रेक ऑन द अपसाइड. सिमिलरली आपका जो इक्विटी मार्केट्स है, इक्विटी मार्केट्स हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन विद द USDINR, क्योंकि जब ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स आर डूइंग वेल, देन you tend to see the rupee appreciate. इसके पीछे का कारण सिंपल है. That's the time when traders expect that FPIs will invest more in India. तो वो anticipation of more FPI flows के कारण rupee tends to appreciate because of shorting of USDR. And just opposite happens जब equity market नीचे जाता है because of outflows. तो ये एक watch list है जो मैं follow करता हूँ हर दिन. I have created this on TradingView, बट आप इसको अदर साइट्स में भी आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे investing.com and others. It's free of cost. So this is the bond market list. Now bond market में we are trying to see the yields, कि जो treasury yields है US की, देन ऑफ स्पेसिफिकली आपको अगर एक यील्ड पे फोकस करना है, वो है US 10-year yields. अभी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये US 10-year yields जितना ऊपर जाएगा, इट कैन लीड टू मोर आउटफ्लोज फ्रॉम एमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया, और इसका एक डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट कैन कम ऑन USDINR. ठीक है, ये जो इंटर मार्केट फैक्टर्स हैं हर वक्त ये रेलेवेंट है नहीं यार, इसका जो रिलेशनशिप्स है दे कीप ऑन चेंजिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. अभी जो कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि US में इंटरेस्ट रेट्स आर हाई एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू स्टे हाई फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आपका दूसरे तरफ मिडल ईस्ट में वॉर लाइक सिचुएशन इज देयर. तो इस बैकड्रॉप में टू मार्केट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. एक है US 10-year yields because of the Fed and the US economy strength, और दूसरा है oil prices because of मिडल ईस्ट जो है वो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है. इसके लिए ये दो मार्केट का डायरेक्ट इंपैक्ट रहेगा on USDINR. So we cannot ignore that. Keep that in mind. US 10-year and crude oil. इसके साथ ऑफ कोर्स यू हैव टू ट्रैक द ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, क्योंकि जो मैं पहले बताया कि इक्विटी मार्केट्स अगर डाउन ट्रेंड में है तो इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन USDINR. एंड ऑफ कोर्स द ओवरऑल इफेक्ट्स, मतलब जो ओवरऑल अदर करेंसीज है वो किस ट्रेंड में है. इज द क्वेश्चन इज दिस: डॉलर क्या बाकी जो मेजर करेंसीज है उसके अगेंस्ट अप्रिशिएट कर रहा है या डेप्रिशिएट कर रहा है? अगर अप्रिशिएट कर रहा है तो नेचुरली प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है फॉर इट टू आल्सो डू वेल अगेंस्ट द इंडियन रुपी. तो एक पियर इफेक्ट आता है. इसके लिए वी हैव टू वॉच दिस एज वेल. यह एफएक्स वॉच लिस्ट. तो ये है आपका इंटरमार्केट पैकेज: करेंसी, कमोडिटी, इक्विटी, एफएक्स. कमोडिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑयल प्राइसेस, क्योंकि ऑयल अगर ऊपर गया, अभी द करंट सिचुएशन है जहां पे ऑयल अभी है 92 के ऊपर, यहां से ऑयल कंटिन्यूज टू मूव अप, इट कैन क्रिएट बिग प्रॉब्लम फॉर द इंडियन रुपी. और लास्ट कुछ महीनों से इट्स इन अ वेरी नैरो रेंज. तो नेचुरली रेंज ब्रेकआउट अगर होगा तो you have a high momentum trade. So it is very important now to watch 3 indicators, in fact 4: oil, US 10-year yields, उसके साथ equity markets trend, and what is the dollar doing against the major currencies. For example, आपको अगर दो particular currencies track करना है, एक है डॉलर इंडेक्स
और दूसरा है USDCNH which is the Chinese currency. अगर USDCNH ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली एंड डॉलर इंडेक्स इज राइजिंग, देन USDINR का हाई चांस बन जाएगा टू ब्रेक आउट. नाउ मैक्रो एनालिसिस. देखिए, मैक्रो एनालिसिस में हम लोगों को इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, जो मैंने पहले बताया. देयर आर सो मेनी इकोनॉमिक डेटा. जीडीपी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, और कितने सारे अनगिनत. हम लोग का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि ये जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है ये कैसे डिमांड और सप्लाई ऑफ USDINR को इम्पैक्ट करता है. सप्लाई कौन करता है? लार्जली सप्लाई आपका ट्रेड से आता है और कैपिटल फ्लो से आता है, और आपका जो कैरी ट्रेडर्स है, जो स्पेकुलेटर्स है, जैसे हम आपकी तरह इन द डेरिवेटिव्स मार्केट, उनसे आता है. सप्लाई और डिमांड. तो स्पेकुलेटर डॉलर बाइंग में भी आ सकता है. जो FPI है वो बाइंग में भी आ सकता है अगर आउटफ्लो है तो, राइट. तो इसके लिए हम लोग ये डिमांड जो सप्लाई है इसको समझना पड़ेगा. हम लोग ट्रेड पे नहीं फोकस करेंगे, हम लोग ओनली फोकस करेंगे टू अंडरस्टैंड जो बेसिकली सबसे बड़ा ट्रेंड क्रिएट करता है इन द मार्केट, कैपिटल फ्लोज, फॉरेन कैपिटल फ्लोज. 4 मेजर हेड्स है. FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हर दिन नहीं आता है. ये जब भी कोई मेजर डील स्ट्राइक होता है, देन इट कम्स इन अ लंप. तो एक लंपी इम्पैक्ट होता है ऑन द USDINR. देन हैपेंस इज FPI. FPI हम लोग को पता है एवरी डे द फिगर कम्स आउट इक्विटी में और डेट में, एंड इट कैन हैव अ कंसिस्टेंट इम्पैक्ट. अगर कंटिन्यूअस FPI आउटफ्लो है तो जैसे आपका लास्ट ईयर था, तो देन USDINR कैन go up. अगर कंटिन्यूअस FPI इनफ्लो है तो USDINR कैन कम डाउन. और आपका फोर्थ है बैंकिंग कैपिटल फ्लोज. इसका काफी सारे एग्जांपल्स है, बट आई विल जस्ट टॉक अबाउट वन. जो NRI का इन्वेस्टमेंट्स है into the Indian banks as deposits, that can be a factor. And the fourth is the ECBs and the FCC. मतलब जो इंडियन कॉर्पोरेट्स है वो अगर फॉरेन कैपिटल अगर रेजिंग करते हैं, बट इसमें से जो सबसे परसिस्टेंट इम्पैक्ट लाता है वो है FPI, और जो सबसे वॉलेटाइल है वो है FPI. इसके लिए FPI फ्लो को ट्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक पांचवा एस्पेक्ट भी है जो मैंने नहीं डाला, बट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट कंटिन्यूअसली, वो है RBI का इंटरवेंशन. अगर RBI आके डॉलर खरीदता है तो इट कैन क्रिएट अ फ्लोर इन द मार्केट. अगर RBI आके डॉलर बेचता है, जो अभी कर रहा है वो, इट हैज कैप्ड द USDINR एट 83.30. तो ये चीज समझना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. RBI का गेम, बिकॉज RBI का ऑब्जेक्टिव एक ही है, आई डोंट वांट वॉलेटिलिटी. मतलब RBI इज अ एंटी मोमेंटम प्लेयर. इसके लिए मोमेंटम तो आता है आफ्टर अ रेंज, but it doesn't sustain for long. So you have to be quick to capitalize. Carry trades are very simple. इसके बारे में I'll not go too much into detail because we don't have the time to go into. But it simply means लोग USDINR को short करते हैं in the futures and then they roll in expiry. So they want to capitalize कि रुपी appreciate करे, और जो प्रीमियम है और फ्यूचर्स ओवर स्पॉट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, उसको मैं कैप्चर करूं. इट इज नॉट वर्किंग नाउ, क्योंकि एक तो प्रीमियम जो है ऑफ फ्यूचर्स ओवर स्पॉट, इट्स एट अ डेकेडल लो, बट एट द सेम टाइम इंडियन रूपी इज नॉट अप्रिशिएटिंग, सो इट इज ग्रेजुअली डिप्रिशिएटिंग. इसके लिए कैरी ट्रेडर्स अभी उतने मार्केट में है नहीं. सो इट इज now it is not such a big factor, but आने वाले महीनों और सालों में जब इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बढ़ जाएगा, मतलब यूएस में जब इंटरेस्ट रेट्स विल कम डाउन, तब दिस कैरी ट्रेड कैन बिकम अ बिग फैक्टर. ये एक एनकैप्सुलेशन है. Again, my objective is not to make you an economist. It's fine if you don't understand what is the balance of payment. बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, ये कंट्री का, मतलब इन दिस केस इंडिया का कैश फ्लो स्टेटमेंट है. ऑफ व्हाट? ऑफ
फॉरेन कैपिटल फ्लोस, मतलब कितना is going out and कितना is coming in, and this is what impacts the demand and supply. So this is how you can do the macro analysis. अभी क्या है कि अगर कोई भी जीडीपी रिपोर्ट आए, आईपी आपका रिपोर्ट आए, कोई और न्यूज आए, तो उसको आप इससे फिल्टर कीजिए कि ये कौन से हेड को जाके इम्पैक्ट करेगा, एफपीआई को इम्पैक्ट करेगा, एफडीआई को करेगा, बैंकिंग कैपिटल को करेगा। जनरली जो सबसे वॉलेटाइल है वो एफपीआई है। अगर एफपीआई का फ्लोज को मेजरली इम्पैक्ट करेगा तो देन इट कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन यूएसडीआईएनआर, बिकॉज जो जो स्पेकुलेटर है वो एफपीआई फ्लोज को फ्रंट रन करेगा, मतलब वो एंटिसिपेट करके पहले ही उसको पोजीशन वो लेगा। तो इसी कारण क्या होता है, एफपीआई फ्लो का जो इम्पैक्ट होता है ऑन ऑन यूएसडीआईएनआर इज टू वेज। वन तो एफपीआई जो फ्लो है उसके कारण, और दूसरा जो स्पेकुलेटर है जो who wants to benefit out of it, उसका जो पोजीशनिंग है उसका इम्पैक्ट है, तो एक एम्पलीफायर की तरह वो काम करता है। So with this, we will open the floor to Q&A. आप जो चैट बॉक्स है उस पे आप अपना अपना क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो, and I'll be taking up the questions. आप अपना क्वेश्चन you can type here on the chat box. There is a question कि oil is up 3%, और जो स्पॉट है, क्योंकि जो यूएसडीआईएनआर का स्पॉट है ना वो साढ़े 3 बजे उसका ट्रेडिंग बंद हो जाता है इंटरबैंक में, बट यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट ऑन द एनएससी रिमेन्स ओपन टिल 5 o'clock, मतलब अभी भी इट इज स्टिल ओपन, अनदर 8 minutes टू गो। अगर मैं यूएसडीआईएनआर का रेट देखूँ तो 83.28 है ऑन द अक्टूबर फ्यूचर्स। सो द क्वेश्चन इज दैट कि स्पॉट बंद होने के बाद हम लोग फ्यूचर्स में एक हल्का सा बाइंग इसमें दिख रहा है, क्यों? द रीजन बीइंग क्योंकि ग्लोबली बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्टर्न जो इशू चल रहा है उसके कारण ऑयल प्राइसेस हैव स्टार्टेड टू राइज आज भी, एंड दैट इज हैविंग अ इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर्स प्राइस। और शायद ये भी हो सकता है कि आरबीआई का जो शायद इंटरवेंशन था 3:30 बजे तक वो कम हो गया होगा, दिस इज अगेन एन अजम्पशन, तो उसके कारण एक हल्का सा अप ट्रेंड है इन द फ्यूचर्स मार्केट। Next question. There is a question from Sonam Singh ki currency trading is profitable for retail traders as a question mark. देखिए currency trading is a fantastic place for a retail trader to start into F&O, क्योंकि यहाँ पे margin जो requirement है that is much lower than what you would pay on a commodity or a equity, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में योर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख के आसपास है। इन यूएसडीआईएनआर इट इज मच लोअर देन 3000 रुपीज, तो 3000 के नीचे एक कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन है इफ यू आर ट्रेडिंग द फ्यूचर्स। इसके लिए करेंसी ट्रेडिंग इज अ फैंटास्टिक प्लेस टू स्टार्ट trading in F&O. वहाँ पे you can experiment, you can identify your mistakes and then scale up. इसके लिए काफी सारे even equity traders they come and trade on the currency market because margin के हिसाब से it makes a lot of sense. Plus ये market operates from 9 till 5, so you can easily trade along with your equity trading.
and what approach to take in currency trading. The currency trading में कितने सारे approaches है. For example, you can do long shots through futures. You can do positional trading, intraday trading. But मेरे हिसाब से as an advice, when you are starting, stick to largely intraday trading, because जो gaps होता है ना, opening gaps, क्योंकि ये तो 5 बजे बंद हो जाएगा, फिर कल को 9 बजे स्टार्ट होगा. In between जो global markets में movement है, उसका impact will come at the open. So avoid taking positions overnight as a when you are starting the trade in the currency market. दूसरा, if you are doing option trading, avoid taking large naked shorts on options, call या put या straddle. If you're doing short straddle या short strangle, keep your position size small. So the whole idea is start small, and as you become successful, you gradually scale it up. Don't try to start with a large volume just because यहाँ पे margin requirement is less. That is something you have to keep in mind. Otherwise, long shots, option trading, सब कुछ आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे margin efficiency है. There is another question, how to handle large gaps in currency, because there are very large gaps in the currency market. देखिए, USDINR में we are not seeing any large gaps for some time now, because as I said, RBI has been intervening across the board. Even offshore market में जब हम लोग का बंद रहता है, they come and intervene. इसके लिए we are not seeing any large gaps. हाँ, EURINR, GBPINR and JPYINR में gaps होते हैं because 5 बजे के बाद इंटरनेशनल मार्केट में द ट्रेडिंग इज ऑन, तो नेचुरली वो एडजस्टमेंट होगा एट द ओपन. द बेस्ट वे टू हैंडल, जो मैंने अभी आंसर किया, कि स्टिक टू इंट्राडे ट्रेडिंग. इफ यू आर डूइंग पोजिशनल ट्रेड, इट्स ओके इन यूएसडीआईएनआर, क्योंकि वहां पे जो गैप्स होते हैं वो उतना लार्ज नहीं होता है जनरली. देयर कैन बी एक्सेप्शंस, बट यूरोआईएनआर, जीपीआईएनआर और जेपीआईएनआर में आप अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो जस्ट स्टिक टू इंट्राडे. तो 4:30 या 4:45 को यू एग्जिट ऑल योर ट्रेड्स. दैट्स द बेस्ट वे. Is it advisable to play with delta neutral strategies at the moment? देखिए, आप अगर शॉर्ट ऑप्शंस का बात कर रहे हो ना इन USDINR, आई अज्यूम USDINR में आई विल बी अ लिटिल स्केप्टिकल फॉर 2 रीजंस. एक, जो आप अगर ऑप्शन प्रीमियम आप अगर देखोगे, जो उसका द अदर साइड इज द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इट इज क्लोज टू द रिकॉर्ड लोस, बिकॉज जो लास्ट 3 महीना में और स्पेशली लास्ट 2 मंथ्स में जो कंप्रेशन इन वॉलेटिलिटी हुआ है, क्योंकि आरबीआई डजंट वांट इट टू गो अबव 8330, द मार्केट डजंट वांट इट टू स्टे बिलो 83. इसके कारण एक स्क्वीज हुआ है, राइट? वो squeeze has created a dangerously low volatile environment. Why I'm saying dangerously? Because जो global situation है वो just उल्टा है. It is now conducive to create volatility. एक तरफ तो just I said कि US में interest rates are very high in तो उसके and plus they are expected to stay high for some time. The US economy is still doing well. तो वहाँ पे yields are rising, the US bond yields. दूसरा is now the added factor of Middle East. तो ये जो confluence है, जो interaction है, इसके कारण volatility can expand anytime. So is ये जो extremely low implied vols are the risk of high volatility एक साथ is clashing. This is a very dangerous environment. So if you are looking to do short straddle, short triangle or any other similar strategies which are unhedged, so iron fly आप करते हो, iron condor करते हो, it's hedged, so it's not a problem. But जब भी आप कोई unhedged strategy करते हो, so वहां पे just keep one thing in mind that अगर कोई बड़ा gap होता है in USDINR, you're able to manage that risk, and if that gap is against you. So if you are doing a short straddle, any gap up or down, if it is large, it will be against you. So keep your position size small, क्योंकि एक तो इतना लो वॉल्स में, मतलब 2.2 2.3% के एनुअलाइज वॉल्स है, यहाँ पे आपको इंट्राडे तो थीटा डी के मिलेगा नहीं. So what you do is that you have to short something, short straddle or short triangle and hold
close to expiry with a weekly option. That increases your risk. So keep your position sizes small, because this is a time to preserve capital. जब यही extremely low volatile range will expand into a breakout or a breakdown, तो आपको एक momentum trading का opportunity मिलेगा, then you commit your capital. But now preserve your capital. If you have to trade, do small trades. Can we do a short iron butterfly regularly? Mm, no, there are no. See, there are always statutory charges for each leg of the trade, and if you are carrying a position, then the brokerages also apply depending on the trading plan which you are applying for. But coming to the fact that can we do short iron butterfly regularly, at this point, जैसे मैंने बोला, short iron butterfly is basically a range trade. मतलब you are betting that that market will be in a range, but because it's a iron, it means it's a hedge strategy. तो hedge strategy आप कर सकते हो, no problem, but keep your volume small, because as I said, risk reward is not conducive at all, and the lemon has been squeezed too far. So if you are doing a lemon squeezing trade now, so it is better you keep your position size small. I'm not saying that don't do it, but keep your position size small, even if it is a hedge trade. Do we have any analysis on up and down gaps, like the gaps are bigger than? It's a very interesting point. So I'll do the analysis and share in our Telegram channel. And by the way, आप अगर हम लोगों का जो करेंसी का टेलीग्राम चैनल पे आप नहीं हो, तो I would request you to join that, because now it has become the country's almost the one of the most active Telegram channels. सो इट इज करेंसी कॉर्नर एट द रेट कोटक सिक्योरिटीज. जब आप टेलीग्राम में जाकर जस्ट आप टाइप कर सकते हो करेंसी कॉर्नर एट द रेट कोटक सिक्योरिटीज, तो कोटक सिक्योरिटीज का वो एम्बलम आपको दिखेगा. And you can there we share the views, the market news analysis, and all this kind of data analysis. But it's a fantastic point from Mr. Beverf, that I do this analysis of up and down moves and see which has more inclination, मतलब gap ups या gap downs का क्या है. The link is just if you go on Telegram and type currency corner at the rate Kotak Securities, currency corner at the rate Kotak Securities, वो red color का आपका logo will come of Kotak. There are around 26,000 plus members, so that is the group. So that's it. With this we end आज का जो discussion है. We would be conducting more such webinars in the future, and we'll be covering option trading, trading in the process, etc. So thank you all for attending Ask a Session.